Hello, everybody, and welcome back to Lit Up with Annie. October start हो गया है, so assuming that we have NET का exam in December, less than 3 months are left. I hope that you're all doing fine and you have a proper schedule and you are following that. I will come out with another video in which I'll talk about how and what to do in these 2.5 months, what should ideally be done. In my paid course, we will soon be beginning with American literature and Indian and world literature. So I thought that let's first talk about background of the American literature, the history of American literature, and that's what we're going to do in this session today. If any of you still wishes to join the full course, the paid course, please join. You will get a very good practice of MCQs as well, and along with the live classes and what we have done, the revision and everything. We'll be beginning with the revision also very soon, since we'll be mostly ending our syllabus by the first week of November. So do join, and the details you will find in the description box. Okay? Coming to the history of American literature, you don't have to go into extreme details about it, but you do need to know about all the different periods of the American literature. जैसे हम ब्रिटिश का करते हैं, ब्रिटिश का of course is much more recognized because वो हम ज़्यादा पढ़ते हैं, अमेरिकन का उतना नहीं. So let's start. The first period begins with the colonial and early American literature. So we call it the colonial period. इसमें क्या था, जब प्यूरिटन सेटलमेंट, colonial expansion हो रहा था, ब्रिटिशर्स ने कॉलोनी बनाई हुई थी, of course, religious zeal, survival in the new world, all of these things are the context, the background context. वेरी डाइडैक्टिक. अब किस तरह का लिटरेचर आएगा ऐसे पीरियड में? रिलीजियस ज़्यादा होगा ना, स्पिरिचुअल फोकस ज़्यादा होगा. वेरी लिटिल इमेजिनेटिव लिटरेचर एंड एम्फसिस ऑन डायरीज, एम्फसिस ऑन sermons, on religious things, on histories was there at this point of time. The major forms of literature that was there was sermons, journals, very captivity narratives and religious tracts. We don't have a lot of major writers that we need to study in depth from this period, but we do have a few जिसका नाम तो हमें पता होना चाहिए. So जैसे कि we have William Bradford. इन्होंने लिखा था of Plymouth Plantation. This is basically history of pilgrims, of providential view. Then we have John Winthrop. इन्होंने भी लिखा a model of Christian charity. तो you can know by the name, religious in context. Anne Bradstreet is an important name. She wrote The 10th Muse Lately Sprung Up in America. So she's the first published poet of America, Anne Bradstreet. Mary Rowlandson, a narrative of the captivity and restoration. ये आ गया आपका captivity narrative. Cotton Mather, ये रिलीजियस हिस्ट्री इन्होंने लिखा, विच ट्रायल्स के बारे में लिखा है. यू ऑल मस्ट हैव हर्ड अबाउट द सेलम विच ट्रायल्स, जहाँ पे बड़े बड़े ट्रायल्स हुए, बट एवरीबडी वॉज इन्वॉल्व विद ईच अदर, इवन द जज, एंड दे वुड ब्रिंग अप वन गर्ल एंड दे वुड से इफ यू विल टेल अस who is doing this witchery work, then you will be spared. But whoever was accused and was put up on trial कि हाँ आपने किया है विचरी काम, और who would not even cooperate, these girls were burnt at stake saying that they are witch. It was chaos. Cotton Mather has written about that. Sorry. Then we have Edward Taylor, a metaphysical poet, and also wrote sermons. So this is about the first colonial period. Second period is the revolutionary period or the early national period. Usually ऐसे ही इवॉल्व होता है सबका. पहले colonial period से then they start gaining their own identity, and then comes the national period. So it is from 1776 to 1830. Approximately we can say the romantic period in the British history, right? From 1832 तक वहाँ पे romantic age चल रहा था. यहाँ पे revolutionary, हम लोग रोमांटिक एज, द ब्रिटिश रोमांटिक एज को एज ऑफ रेवोल्यूशंस भी कहते हैं.
same revolutionary period, early national period. Why? Because we had the American Revolution at this point of time. Declaration of Independence happened in 1776. उस तरफ French Revolution. So there was a rise of nationalism after the Declaration of Independence. तो यहाँ पे क्या आएगा? Political treaties, pamphlets, essays, कुछ enlightenment thought, कुछ nationalist issues पे. This was the first attempt at fiction writing in this period. What were the major forms of writings? We had political writings, autobiographies, satires, and some early novels. Who are the major writers of this time? We have Benjamin Franklin, जिन्होंने autobiography लिखी. He's a model of self-made man. Tom Paine के बारे में सबने सुना है. Common Sense लिखा, The American Crisis लिखा, political agendas पे, The Rights of Man. Thomas Jefferson, Declaration of Independence, another political work. Philip Freneau, the poet of American Revolution. Charles Brockden Brown, the first American novelist, we can say, who wrote Wieland, didn't become extremely famous. Now we have one famous writer here who is Washington Irving. The sketchbook of Geoffrey Crayon, Rip Van Winkle, The Legend of Sleepy Hollow, ये सब इसमें है. That became famous. And another very famous writer was James Fenimore Cooper. इनको भी हम फर्स्ट अमेरिकन नॉवलिस्ट की तरह जानते हैं. The Leather Stocking Tales, एग्जाम में भी क्वेश्चन आया है इससे. इसमें नैटी बम्पो है एज फ्रंटियर हीरो. फिर यहाँ पे शुरू होता है द रोमांटिक पीरियड, द अमेरिकन रेनेसां, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड इन अमेरिकन हिस्ट्री. यहाँ से आपका मेजर जो राइटिंग्स हैं, जो मेजर राइटर्स हैं अमेरिकन लिटरेचर में, वो आते हैं. So it's often called the American Renaissance, a flourishing of imaginative literature. So we had transcendentalism here, which is a very important feature of this period. Abolition, reform movements, expansion, westward expansion. So national identity, individualism, symbolism, romantic ideals. These are the major features. Especially if you're writing, if you are in your mains ka paper, all of these features are very important. The major movements in this period were transcendentalism. What is that? Self-reliance, transcendentalism. Belief in the intuition, belief in nature, spiritual self-reliance. The major writers of transcendentalism were Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau. Emerson ने लिखा नेचर, द अमेरिकन स्कॉलर, और थॉरो ने लिखा वॉल्डन, सिविल डिसओबीडियंस. दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं. वॉल्डन से एग्जाम में क्वेश्चन आया है. फिर एक आया एंटी ट्रांसेंडेंटलिज्म, जिसको हम डार्क रोमांटिसिज्म भी कहते हैं. इसमें जो वर्क्स थे ना, दे फोकस्ड ऑन सिन, गिल्ट, ईविल पे फोकस था. जैसे very important writers, Nathaniel Hawthorne, The Scarlet Letter, The House of the Seven Gables. यहीं पे Herman Melville, Moby Dick, a classic work, Billy Budd, Edgar Allan Poe, The Cult. पोइट्री लिखी इन्होंने, जैसे कि द रेवन, और बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, जैसे कि द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर एंड अदर्स. बहुत सारा डिटेक्टिव फिक्शन भी लिखा है. पोइट्री ऑफ दिस टाइम, पोइट्री जो आई वो आई डेमोक्रेसी और नेशन की. अभी रिसेंटली वी हैड डन वॉल्ट विटमैन. सो वॉल्ट विटमैन, लीव्स ऑफ ग्रास, इसमें ही इज द मास्टर ऑफ फ्री वर्स, एक्सपेंसिव वॉइस है. एमिली डिकिंसन, इनोवेटिव, कंप्रेस्ड, पर्सनल लिरिक पोइट्री. A very important poet of the age, Emily Dickinson. ठीक है, इन्होंने innovation किया with the punctuation. You will find different kinds of it. Then we have other writers like Harriet Beecher Stowe, Uncle Tom's Cabin,
Frederick Douglass, narrative of the life of Frederick Douglass, etc. फोर्थ आता है हमारा रियलिज्म का पीरियड. सेम जैसे ब्रिटिश लिटरेचर में रोमांटिक एज आया, फिर हमारा विक्टोरियन एज आता है जिसमें हम लोग रियलिज्म की तरफ ज़्यादा जाते हैं. अमेरिकन लिटरेचर में भी है. दिस इज़ फ्रॉम 1865 टिल 1914. 1914 वर्ल्ड वॉर 1. सिविल वॉर का आफ्टर मैथ है ये. रिकन्स्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियलाइजेशन सब जगह चल रहा था ना इस टाइम पे. एंड अगेन वेस्टवर्ड एक्सपेंशन. नाउ देयर वाज अ फोकस ऑन द ऑर्डिनरी लाइफ, सोशल रियलिटीज़, रीजनल और लोकल कलर राइटिंग पे फोकस था. Who are the major writers here? Mark Twain, Henry James, William Dean Howells. So Mark Twain ने आपके एडवेंचर्स लिखे बहुत सारे, वेरी रियलिज्म और बहुत सटायरिकल वर्क्स लिखे हैं. एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फेन, ऑफ टॉम सॉयर एट्सेट्रा. हेनरी जेम्स ने, अब हेनरी जेम्स वॉज एन अमेरिकन ब्रिटिश राइटर, तो हमने हेनरी जेम्स को अपनी क्लास में पढ़ लिया है. अ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, द टर्न ऑफ द स्क्रू, अगेन साइकोलॉजिकल रियलिज्म, इंटरनेशनल थीम्स ये लेके आए. विलियम डीन हावेल्स, डीन ऑफ अमेरिकन रियलिज्म, द राइज ऑफ सिलास लैफम. देन वी हैव सम रीजनलिस्ट्स जो लोकल कलरिस्ट थे, जो कुछ लोकल चीज़ों के ऊपर दे वर थ्रोइंग लाइट, लाइक ब्रेट हार्डे, केट चॉपिन, अवेकनिंग प्रोटोफेमिनिस्ट, सारा चार्ल्स चेस्टनट, अफ्रीकन अमेरिकन रियलिज्म. यहाँ पे अब धीरे धीरे women of color या men of color, African American, these writers will also start gaining that fame, the due fame. Next age is naturalism and the early modern period. Now dates overlap कर सकती है because different books you will find different dates. तो 1890 से 1930, और या फिर आप बोल सकते हो हाई मॉडर्न पीरियड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1, 1914 के बाद, सेम लाइक द ब्रिटिश लिटरेचर. यहाँ पे डार्विनिज्म, डिटर्मिनिज्म, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, urban poverty, this is the context now, how it is changing, how the life is shaped by environment, by heredity. डार्विन आ गया था ना, क्योंकि डार्विन ने अपना बुक पब्लिश किया था. देयर वाज अ लॉस ऑफ फेथ. सब लोग सोच रहे थे अभी तक हम लोग जो बिलीव करते थे वो तो सच ही नहीं है. डार्विन कहीं हमें कुछ भी तो नहीं बता रहा. तो हेरिडिटी पे अब धीरे धीरे चीज़ें आने लगी, सोशल कंडीशंस पे, पेसिमिस्टिक टोन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. So we had writers like Stephen Crane, who wrote Maggie, A Girl of the Street, The Red Badge of Courage, very important work. Frank Norris, Theodore Dreiser, Jack London, and Sinclair, Upton Sinclair, The Jungle. So we have the transition to the modern period here, with writers like Sherwood Anderson, who wrote Ohio, Winnisburg, etc. अब इसी में ओवरलैप, इसी का आप सब पार्ट बना लो, हाई मॉडर्निज्म आफ्टर द वर्ल्ड वॉर. सो वर्ल्ड वॉर 1 कम्स इनटू द लाइट, एंड अमेरिका, यू ऑल नो, एंटर्ड लेट बट प्लेड द टर्निंग, जो पूरा वॉर का टर्निंग पॉइंट था, दैट वाज ब्रॉट इन बाय अमेरिका. दे ड्रॉप्ड. So urbanization, alienation, the lost generation. We have features like experimentation with form. We have fragmentation, जो modernism का features होते हैं. We have irony. We have, sorry about the background noise. We have stream of consciousness, जो modernism के features हैं. So we have the major poets like T.S. Eliot, जिनको हम British writings में भी पढ़ते हैं because he was an expatriate. He had come to America. Same goes for Ezra Pound. Imagism, Cantos. We have Wallace Stevens, Marianne Moore, William Carlos Williams, Imagism, Objectivism में, and Robert Frost. Robert Frost को सबने स्कूल में पढ़ा होता है. Traditional forms with modern complexity. जैसे कि हम लोग आर्नल्ड को पढ़ते हैं या येट्स को पढ़ते हैं, वैसे ही हम लोग फ्रॉस्ट, द ट्रेडिशनल फॉर्म विद मॉडर्न कॉम्प्लेक्सिटी को पढ़ते हैं. इसी टाइम में वी हैव द नॉवलिस्ट लाइक फिट्जजेराल्ड, The Great Gatsby, Hemingway, best novelists, one of the best novelists of the American literature,
The Sun Also Rises, Farewell to Arms, etc. Then we have William Faulkner, who wrote The Sound and the Fury, As I Lay Dying. And then we have John Dos Passos, जिन्होंने USA ट्रिलॉजी लिखी है. यहीं पे हार्लेम रेनेसां, एज आई टोल्ड यू, अफ्रीकन अमेरिकन विल कम इनटू द पिक्चर. तो 1920s में आया हार्लेम रेनेसां. हार्लेम इज़ अ प्लेस जहाँ पे these black people went there to in search of jobs and better opportunities. वहीं पे एक रेनेसां लेके आए. We have Langston Hughes, Claude McKay, Zora Neale Hurston, Jean Toomer. You know, they started talking about the black rights and the upliftment of the writers and everybody in common. Finally, we have the post-World War II literature, which is after 1925 and further. Cold War, consumerism, civil rights movement, counterculture, all of these are the contexts. Confessional poetry यहाँ पे आती है. Postmodern, वो जो पूरा एक zeal है, drama of ideas and postmodern sensibility, the fragmentation, but the accepted kind of a fragmentation. So we have poets like Sylvia Plath, confessional poetry में, Allen Ginsberg, how the Beat Generation comes in, Robert Lowell, etc. The novelists, Ralph Ellison, Black, Invisible Man, Saul Bellow, Herzog, Norman Mailer, J.D. Salinger, Catcher of the Rye, a beautifully written work, Jack Kerouac, On the Road, another Beat Generation के writer. We also had some playwrights like Arthur Miller, Tennessee Williams, Edward Albee, जिन्होंने बहुत important works लिखे हैं, like Death of a Salesman, Tennessee का A Streetcar Named Desire, Edward Albee का Who's Afraid of Virginia Woolf, another PYQ. And then comes the contemporary American literature, or we can also call it postmodern and contemporary, which is 1970 से present तक. Irony, metafiction, fragmentation, play with language, अजीब सी language, experiments with linguistics, and multicultural voice. Now, it's not limited to the native people, but it's like a global scenario now. So, Thomas Pynchon, Gravity's Rainbow, Don DeDillo, very important, White Noise, Toni Morrison, जिन्होंने Beloved, African American experience को लेके आई, Philip Roth, John Updike, who wrote the Rabbit series, Maya Angelou, the black writer, beautifully written works, I Know Why the Caged Birds Sing, Sandra Cisneros, The House on Mango Street, ये आपका चिकाना लिटरेचर को लेके आई, एमी टैन, ऑगस्ट विल्सन, another African American, ये Asian American, एमी टैन. So we had feminist literature, ethnic literature, immigrant की voice, experimental fiction, environmental writing, all of these जो हमारा present जो हम सोचते हैं, जो हमारी sensibilities हैं at this point of time, वो सब अब हम literature में देख रहे हैं. ठीक है, तो these are the major periods, the history of American literature that you can, for you to understand the chronology especially. ठीक है, तो ये मैंने basic आज दिया आपको, and we'll try to move on to talk about these writers also. Summary देख लेते हैं. Colonial period 1607 से 1776, Revolutionary period 1776 से 1830, Romantic 1830 से 65, रियलिज्म या रीजनलिज्म बोल लो 65 से 14, इसी में नेचुरलिज्म भी आएगा, 1890 से 1930 तक आया. फिर इसी में आपको मॉडर्निज्म भी आएगा 1914 से 45, फिर पोस्ट वॉर 45 से 70, कंटेम्प्रेरी 70 से प्रेजेंट. एंड यू टू, पहला आपका जो स्टेप रहेगा वो इसमें ये रहेगा कि आपको यू टू आइडेंटिफाई द राइटर्स इन दीज एजेस. थोड़ा थोड़ा इनके बारे में, एज के बारे में पढ़ना है कि क्या माहौल था अमेरिका में इस टाइम पे, रियलिज्म था तो क्यों था, नेचुरलिज्म था तो कहाँ से आया, इन्फ्लुएंस क्या था, मॉडर्निज्म पोस्ट मॉडर्निज्म का आपको पता है, वर्ल्ड वॉर्स हैं. आइडेंटिफाई द राइटर्स, ऑल थ्री, चाहे पोएट्स हैं, फिक्शन राइटर्स हैं, या आपके प्ले राइट्स हैं और नॉन फिक्शन राइटर्स हैं. एंड ऑफ कोर्स शॉर्ट स्टोरी लाइक एडगर एलन पो या एंड अ फ्यू अदर्स. तो आइडेंटिफाई दीज फर्स्ट. ठीक है, and this will set up your base for the history of American literature. It's not difficult. Unlike British literature, writers जो हैं वो फिर भी selected हैं जो हमने पढ़ने हैं.
All right, so I hope this is clear. Let me know in your comments um, if you wish to read more on American literature. Thank you very much. If you wish to join the full paid course, get in touch with me. I have also introduced my website. You can go and explore that. I'll put the link in the description box, and you can take the paid membership also of that. Thank you. See you in the next one.